Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. I welcome each and everyone here, and before we start, let me know if I am visible, am I audible to everyone, and I welcome each and everyone here. And make sure guys, if you are new in this channel, please subscribe our channel. And as we know that the newspaper is very important और your एग्ज़ाम perspective, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर प्रथम टेस्ट प्रेप मेंटर्स. And good morning to everyone once again. And as we know that newspaper is very important for your exam. And one more thing that you should know about what exactly we discuss in the news analysis. We discuss about national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, miscellaneous, and we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. So this is very important for you. And here is the quote of the day, that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is questions of the day. We will ask you the 5 questions after end of the session, and make sure guys कि you just need to try to attempt those questions because that was a very important. क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं माय फ्रेंड, वो आप देखोगे कि इसमें आपके एग्जाम में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर के से आर्टिकल से ही होते हैं. और इफ़ यू विल प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल डेवलप सच द टेम्परामेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो टेम्परामेंट जो है वो आपको कब होगा, वंस यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. एंड क्विक टिप्स में निमोनिक्स के मेथड से एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक से हम सीखेंगे आए कि आज सार्क कंट्री में जितने भी नेशन है उसको हम कैसे लर्न करें. हियर इज द वेरी फर्स्ट वर्ड. द वर्ड मीन्स रिज. रिज वॉज चोजन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर. ये जो वर्ड है आपका वर्ड ऑफ द ईयर, इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने सेलेक्ट किया है. And its word of the year for 2023, a term that gained popularity after actor Tom Holland claimed he did not possess in a BuzzFeed interview in June. What does the word riz mean? According to Oxford University Press, जो पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को, riz is defined as style, charm, attractiveness and ability to attract a romantic or sexual partner, and the term is believed to be a shortened version of the word charisma. So in short, we need to understand these things. The previous word chosen by the OUP, that was include wax, and include wax, which means that in 2021 climate emergency, the word climate emergency, that was in the year of 2021, and 2022 में the very first time the word public vote for the first time Goblin mode. So Goblin mode, that was in 2022. So this year the word is riz. How is the word of the year is chosen? Typically the word of the year chosen by Oxford relies on evidence of usage that derived from its regularly updated corpus, which comprise of over 22 billion words. So but for the last 2 years the general public has also been involved in the process. And ये इस साल जो है, जब आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शॉर्ट लिस्टेड द 8 वर्ड्स दैट वाज क्रिएटेड एंड ऑल चोजन टू रिफ्लेक्ट द मूड, इथॉस और preoccupations of the past year, and these were put to public vote, right? So the word is that riz. Here we have the next word is next जो है आपका है वो understanding the GPS works. How the GPS का सबसे पहले फुल फॉर्म ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. सो इन शॉर्ट इंडिया का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है विच इज नोन टू बी अ नाविक, राइट? सो GPS has significantly changed over our expectations of where we and our sense of place, and the major sectors which employ the technology include agriculture, construction, surveying, logistics, search and rescue, air travel, meteorology, seismology and military operation.
So few everyday technology have had the kind of revolutionary impact of the global positioning system, that from the civilians or military. What is GPS? The US Department of Defense and started the GPS program in GPS program here that was started in the by the US in 1973 में. And it was launched the first satellite जो launch किया गया था my friend with using the GPS system, that was in which year 1978 में. So the modern GPS satellite constellation consists of 24 satellites. The modern जो है आपका GPS system उसमें 24 satellites हैं. So the space segment of course consists of 24 satellites. The 6 orbits, they occupy around 20,200 किलोमीटर as we can see. ये GPS काम कैसे करता है? Obviously एक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं एंड उसमें दैट द सिग्नल फिर आगे रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रैवल होती है. सो इन शॉर्ट वी कैन सी द बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, द रेडियो वेव्स ट्रेवल्स ऑल द स्पीड ऑफ लाइट एट द स्पीड ऑफ लाइट ऑन योर स्मार्टफोन, जो भी आपके पास स्मार्टफोन है. एंड फिर GPS क्या करता है? रिसीव्स पिक्स दिस सिग्नल अप एंड यूसेज इट्स कैलकुलेट द प्रिसाइज डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट. एंड जो वो डिस्टेंस होती है माय फ्रेंड वो इक्वल होती है टू द स्पीड ऑफ लाइट जो ट्रैवल करती है टाइम के हिसाब से. सो इन शॉर्ट जो GPS हमारे फोन में ऐसे काम करता है. एंड इंडिया मूटेड इट्स ओन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो आपको मैंने बताया नाविक, ये इंडिया का अपना सिस्टम है नेविगेशन सैटेलाइट. सो इट मीन्स नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इन 2006. लेटर रिसर्च नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. ये जो नाविक है आपका, दैट वाज अ नेविगेशन with Indian constellation. So do other country have GNSS? तो yes, बहुत सारे कंट्रीज में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, ये अपनी खुद की सिस्टम होती है जिसपे ये काम करते हैं. जैसे सिमिलरली अपने इंडिया का अपना नाविक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. क्लियर है? चलो जी. नाउ अगर नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द अंबेडकर टच इन रीथिंकिंग सोशल जस्टिस पॉलिसी. माय फ्रेंड, ये इस टाइप के आर्टिकल्स में आप कहोगे कि आप देखोगे इस साल भी आपके क्लैट के एग्जाम में इस टाइप के पासेस पूछे थे और वो स्टैटिक पोर्शन के ऊपर था. और ये जो पासेस है बेसिकली ये जिन्होंने लिखी है ये हरीश वानखड़े जी हैं, जो आपको इसमें आपको फोटो भी दिख रही होंगी आपको. ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU के, राइट. सो द लीडर ऑफ द मार्केट इकोनॉमी शुड बी एजुकेटेड टू अडॉप्ट वेलफेयरिस्ट मेजर्स फॉर द वर्स्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स. सो आप देखेंगे इसमें हमें जानने वाली बात क्या है. द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज सिनोनिमस विद बोथ द वैल्यू ऑफ सोशल हार्मनी एंड रिफॉर्म्स दैट इंश्योर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू इट्स पार्टिसिपेंट्स. स्पेशली हम बात करें हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड पीपल and the further democratic institutions are mandated to engage with the worst of social groups and ensure their substantial participation as a significant governing class in political affairs. Or the socially oppressed group in India, especially Dalits, adore and celebrated such modern virtues because of their liberative potential and egalitarian goals. Baba Saheb Ambedkar जो थे, who is the founding father of our Indian Constitution, Baba Saheb Ambedkar emerged as a torch bearer of liberal, enlightened ideas and expected that post-colonial India जो है that would be distinct from the exploitative Brahminical past and invite Dalit and other marginalized community to equal shareholds in the nation's income and political development. But हम बात करें अपने country की, my friends, ironically the modernist objectives have been partially achieved only today with an ascent of neoliberal economic development. So current times it is a norm of witness the domination of social elites as powerful authorities, national leaders, business tycoons and cultural influence. अम्बेडकर साहब की इसमें एक कोट को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने उस टाइम में कही थी. B.R. अम्बेडकर की जो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस वुड reprimand the current realm of neoliberal economy for its neglect of the concern of Dalits and Adivasis that would direct the market of more responsible towards the worst of social group. It means that it would also direct the state of reduce of pitfalls and
slippage now in social justice policy and make them more relevant in the present day. So the अंबेडकर साहब जो थे उन्हें उनकी जो आइडियोलॉजी थी which we need to understand this. So Ambedkar becomes crucial in such a discourse between his approach allows to diagnose illness in a social and economic order. He offers ethical corrective measures to make institution जहाँ पे more democratic representatives and closer to claims that and desire of marginalized social group. So it is well documented that the neoliberal markets is alien to such ethical values and overtly celebrates the exclusive control of few corporate bodies and businessmen over capitalist development. और बात करें आदिवासी कंसर्न जो है जिसके लिए कि अभी मणिपुर में भी वायलेंस हुए थे, आपने देखी होंगी न्यूज़ में भी बहुत बारी. सो यहाँ पे it is required that a new social justice policy to be expanded to the private economy with a focus to democratize the working class and to reduce poverty. So Adivasi concern to protect their habits, ecological order and cultural autonomy must be addressed while endorsing the fact about the market economy inevitability. Therefore, it is very necessary that जो हमारा current phase है of economic development है, technological innovations है and the expansion of the market economy, that should also be directed towards making Dalit and Adivasi groups. जो हमारा new framework है social justice का must ensure that an impressive class among Dalits and Adivasi emerge as the leaders, business entrepreneurs and influencer in the economic sphere. फर्दर अगर अब इस आर्टिकल में बात करें तो यहाँ पे दलित और आदिवासी को ज्यादा फोकस्ड किया गया है. So Dalit and Adivasi should not be identified only as the poor and migrant working class that is dependent upon the benevolence of corporate social responsibility CSR for their livelihood, and instead ये जो groups हैं that should be advanced as the essential components of urbanization, industrialization, and third we can say like production of technological innovation. So जो अम्बेडकर साहब जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक ड्रीम था वो आज के टाइम में जो है उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द दलित एंड आदिवासी पीपल. So Ambedkar version of social justice that would help us to redefine capitalism as a pluralist and cooperative mode of economic order, और ये हमें इस चीज़ की गारंटी देता है the substantial participation of Dalit and Adivasis in the market economy and in the associated institution of power and privilege. तो आप देखिए माय फ्रेंड्स, जो आपका फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे आपको टू कंजर्व द फॉरेस्ट लैंड हमें क्या चाहिए होता है, वी वांट आदिवासी, इट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल. और अगर आप कहेंगे फॉरेस्ट हमें इकोसिस्टम को बचा के क्यों रखनी है, बिकॉज फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाने से ये फ़ायदा है कि लाइक आपका एक जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर बैलेंस्ड होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के ऊपर. और अगर एनिमल और फॉरेस्ट इकोसिस्टम बैलेंस्ड है इट मीन्स नेचुरल डिजास्टर होने के बहुत लेस चांसेस हैं. अभी आपने देखा होगा कि लाइक जोशीमठ वाला इशू आपने देखा होगा जहाँ पे आपके लैंड सबसाइडेंस के इश्यूज आए थे. रिसेंटली अभी आपने उत्तराकाशी में देखा होगा जहाँ पे टेलन में इशू आए थे. ये सारे नेचुरल डिजास्टर के रीज़न हैं ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हाईवेज बन रही है जहाँ पे चार धाम यात्रा के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, बट देयर इज पॉसिबिलिटीज़ कि जो आपके जो माउंटेन एरियाज़ हैं उन माउंटेन एरियाज़ में इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन वर्क को आपको अवॉइड करना पड़ता है. चलो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. ये हमारा रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. तो कहानी ये है माय फ्रेंड कि यहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है सॉरी, उनकी एमपी है महुआ मोइत्रा, दैट फेसिंग एन इंक्वायरी बाय एन एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. सो यहाँ पे द एथिकल कमेटी ऑफ द लोक सभा इज बिलीव टू हैव रिकमेंडेड द एक्सक्लूजन ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर महुआ मोइत्रा फ्रॉम द लोक सभा फॉर हर अनएथिकल कंडक्ट एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. और इसकी वजह से यहाँ पे एथिकल कमेटी एग्जामिन कर रही है इसकी कंप्लेंट को विद एक्यूज हर आस्किंग क्वेश्चंस टू टारगेट अ बिजनेस हाउस एट द बिहीस्ट ऑफ बिजनेसमैन. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स कमेटी, क्या काम होता है. एथिक्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर ऑफ 2000 टू ओवरसीज
the moral and ethical conduct of members and examine cases of unethical conduct referred to it. So it must be noted that the term unethical is not defined. Parliament में define नहीं है. So it is left to the committee to decide whether any act is unethical or not. फिर बाद में 2007 में 7 साल के बाद MP accompanying his close female companion impersonating her as his wife was considered unethical by the committee, and it recommended suspension of MP from 30 sitting of the house. ये privilege committee है क्या parliament की? ये जो privilege committee है my friend of special inquiry committee examines the more serious accusation against a member. 1951 में जब हमारे पास फर्स्ट टाइम इलेक्शंस होती हैं उस टाइम में इसको कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था. उसके बाद यहाँ पे स्पेशल कमेटी इंक्वायर कर दी कैश फॉर क्वेरी स्कैम फॉर ऑफ 2005 वेयर 10 MPs ऑफ लोकसभा दैट वर रिकमेंडेड फॉर एक्सक्लूजन. सो इज द एक्सक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशनल? जी हाँ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 101 लिस्ट डाउन द ग्राउंड्स ऑफ अ वेकेशन ऑफ अ सीट बाय एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इट इंक्लूड्स वॉलंटरी रेजिग्नेशन जिसमें आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस एब्सेंस ऑफ द हाउस ऑफ 60 सिटिंग्स अगर आप हाउस में नहीं आते हैं तो आपका यहाँ पे ये क्या होता है, डिसमिस हो जाती है. हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट इन दिस रिगार्ड एंड यहाँ पे एक केस आपको स्टडी ध्यान में होनी चाहिए. लाइक इन राजाराम पाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर 2007 इट upheld the power of parliament to expel its power members of breach of privilege by interpreting article 101 to exclude exclusion as a ground. ठीक है, चलो जी, ये सारी चीजें क्लियर. नाउ अब टाइमलाइन की बात करते हैं. यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हो रही है आपको यहाँ पे फोकस करनी है 2023 में. ये हो रही है अबू धाबी यूएई में और 2022 में हुई थी इजिप्ट में. और आप इंडिया ने कब होस्ट किया था, इन विच ईयर वी hosted 2002 COP8 न्यू दिल्ली इंडिया, ये आपका 2002 में है. नेविगेटिंग यूएस चाइना रिलेशनशिप, और तो इसमें आपको ये देखना है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनीज काउंटरपार्ट जिनपिंग हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस APEC. What does the status of Taiwan remain a contentious issues between the two superpowers? So the US President Joe Biden and the Chinese counterpart Xi Jinping held a summit, their second in San Francisco on November 15th on the sidelines of the Asia Pacific Economic Corridor. इसके आउटकम से क्या क्या कंट्री को फ़ायदा होगा वो चीज़ें मेंशन की हुई है. वन चाइना पॉलिसी जो जहाँ पे वॉशिंगटन ने मतलब यूएस ने एक्सेप्ट किया है बीजिंग एज द ओनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड एक्नॉलेज लाइक but does not enhance Taiwan as a part of the country. यहाँ पे है bigger and better. India on the track of becoming third largest economy. It needs to seize the manufacturing opportunity. बिल्कुल हाँ, कई बार मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये चीज़ें बताई है कि हमारी जो सेक्टर्स होते हैं माय फ्रेंड, अगर आप देखें इसमें पहला आता है आपका इसमें प्राइमरी सेक्टर. जो हमारी इकॉनमी है वो इकॉनमी आपकी किस टाइप की है वो देखो. पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद है आपका सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी के बाद आपका आता है टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटिंग क्यों है, क्यों डोमिनेट क्यों करती है इंडिया को? बिकॉज यहाँ पे more than 50% ऑफ पीपल देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर लैंड. तो यहाँ पे बट प्रॉब्लम इज दैट, आपको मैंने कितनी बार बताई कि ये चीज़ें आपको जानी इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि जितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं उतना आपका जीडीपी में आउटकम नहीं है. सो दो disguised unemployment issue has been still prevailed in the primary sector. Tertiary sector, it means service sector, and the secondary sector, which means that manufacturing. So if India is on track to becoming third largest economy, it needs to seize the manufacturing opportunity. So जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP क्या होता है माय फ्रेंड? बेसिक चीज़ें आपको जाननी इंपॉर्टेंट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, the total value of goods and services produced in a year within the defined territory that is known to be GDP. The GDP estimates released last week by the National Statistical Office NSO show the Indian economy grew at healthy 6.7% in the second quarter of the
ongoing financial year, surpassing expectation, and this has reaffirmed optimistic assessment of the country's medium-term growth trajectory. So earlier, the International Monetary Fund, as per its October World Economic Outlook database, has pegged the Indian economy to grow at an average 6.3% year. तो इस प्रोजेक्शन के बाद यहाँ पे ये हम डिस्कस कर चुके हैं. 1.3 बिलियन पीपल हैं. डिसएबिलिटीज़ के केसेस में आपको पता है कि यहाँ पे स्पार्क प्रोजेक्ट को जाना इंपॉर्टेंट है. और स्पार्क प्रोजेक्ट क्या है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद वुमेन डेवलपमेंट कोऑपरेशन महाराष्ट्र ने यहाँ पे स्पार्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया. स्पार्क मतलब स्पार्किंग डिसएबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो द गोल ऑफ सोशल जस्टिस दैट कैन नॉट be achieved without the inclusion of person with disabilities in all spheres of development. Basically, ये इसमें इनका मेन क्रक्स है. क्विक टिप्स में आपको सार कंट्रीज को लर्न करने के लिए यहाँ पे अब आप बात करते हैं MBBS स्पेन, और यहाँ पे M stands for मालदीव्स, B for बांग्लादेश, B भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, और SAB. तो ये स्टेट्स इन इंडिया sharing boundary with Bhutan, Sikkim, Arunachal, Assam and Bengal. अब यहाँ पे questions of the day, and the very first question is here. Which of the following statement about rat hole mining is correct? So it refers to a hazardous and illegal practice related to the coal extraction in certain regions. So D हमारा right answer है. उसके बाद है अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द नीति आयोग. नहीं जी, यह है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. Which of the following groups of planets are considered as gas giants in our solar systems? Saturn, Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, Saturn and Jupiter. तो ये इसमें ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारा बी ऑप्शन है. So gas giants are large planets composed mostly of gases such as hydrogen and helium with a relatively small rocky core, and the gas giants of our solar system, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, together make up a group known as the Jovian planets. उसके बाद है आपका which substance is commonly used in cloud seeding, जिसको हम कहते हैं artificial rain. Artificial rain के लिए that to promote the formation of ice crystals in cloud, वो है आपका silver iodide, AgI. And the last question, production gap report, ये पब्लिश करता है D. इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये करता है SEI, Stockholm Environment Institute. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. And make sure AILET वाले जो बच्चे हैं उनके लिए best of luck for your exam. And make sure that if you have any questions, let me know in the comment section. And we'll meet you on Monday. Till then, bye-bye and take care. If you have any question, please let me know in the comment section. Thank you so much for joining with us, and make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned, bye-bye and take care.